Hello students, good afternoon all. This is me Dr. Kales. Welcome you all to this session. In this session, we will discuss some important questions from Indian polity that had been asked by the OPSC in its civil service examinations preliminary paper, particularly in the year 2016. In the past lecture, we have discussed the questions from the Indian polity that had been asked by the OPSC in the year 2015. So it's a series. So in the next class also, we will discuss the polity questions held in the preliminary paper of 2017. So if you analyze the numbers of questions being asked by the commissions every year in its civil service preliminary examinations, it varies from 15 to 17. So this area holds an extreme importance for the examiner as well as for the students. So we shall not ignore this segment. Before starting the lecture, let me introduce first who am I. I am Dr. Kailash Chandra Devuri. I am a practicing veterinary surgeon under government of the Odisha. So let's get started. The first question is, in which year the RTI, that is Right to Information Act, came into force? The obvious answer, the correct answer is 2005. The RTI, the full form of the RTI, Right to Information Act. Right? By utilizing this RTI Act, RTI instrument, any citizens can avail any information from the competent authority, better to say from the public servant. This RTI Act, also known as Freedom of Information Act 2005. Here we can express our free speech, our expressions. Here we can express our free speech and expressions, which is enshrined in the Holy Constitutions under Article 19. Right? So we can seek any sorts of information from the government. Here we have certain reasonable grounds of restrictions. If a citizen wants to get information from the military, from the diplomats, from any secret things, he cannot avail all the informations. We have here certain reasonable grounds of restrictions, like in military secrecy, the intelligence secrecy, you cannot avail. Right? So here a reasonable ground of restriction is there. So the Right to Information Act came into force when our country witnessed a major surge in the corruption. This is an instrument that has been used to promote transparency as well as fix accountability of the public servant. Under utilizing this Information Act, we can seek information from the public authority. This act is not extended to any private players, citing the reason of breaching of privacy. As you know, privacy is a matter that is right to privacy. Recently, the Supreme Court has told it is a fundamental right under Article 21. Right? So the RTI has been amended in the year 2019. Under this act, there is a provision of appointment of the CIC, that is Central Information Commissions. In the previous act of 2005, we have no any specific tenure of the CIC. But in the RTI Amendment Act of 2019, the Government of India can fix the tenure of the Central Information Commissions. Right? So these all are the some additional informations regarding the RTI Act. Coming to the next question, which article under the Indian Constitutions pertains to special status to J&K? Right? Recently, we have repealed the Article 370, which is directly associated with the special status to J&K, that is Jammu and Kashmir. So abrogation or repeal
of the Article 370 by the Parliament is, is done by a simple presidential order. So, as you know, the article is a special status that has been given to the resident of the Jammu and Kashmir. This Article 370 is present in the part 21 of the Indian Constitutions that deals with the temporary transitions and special provisions to the J&K, except defense, external affairs and communications. The Parliament cannot make any law for the state of Jammu and Kashmir. So this is a special status that has been given by the to the resident of the J&K. Another thing was abrogated or repealed, that is Article 35A. Right. So dear students, please do remember all these things. Coming to the next questions, in which year SARC, that is SARC, was formed? First, you have to remember the full form of the SARC. So the full form of the SARC is the South Asian Association for Regional Cooperation. Again, I am repeating, South Asian Association for Regional Cooperation. Right? So it was formed in the year 1985. This association was formed to maintain regional stability, regional peace, prosperity, to uphold, to surge the regional economic growth, cooperations, strategic partnership in the area of economics, education, scientific, cultural aspect. All these things we have to, under this umbrella SARC has to be maintained. So this was the aim of formation of the SARC. So the headquarters of the SARC is at Kathmandu, that is present in Nepal. Here we have 8 nations, 8 neighbors nations of India. There, India, Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. So we have 8 numbers of nations present in the SARC platform. So as we know, the Pakistan is continuously supporting the terrorism. So very recently, the India has boycotted the Pakistan from its SARC summit. Another contentious issue is the growing presence of China in the area of the Pakistan. That's why the Pakistan as well as China, they are playing a foul play in the SARC functioning. That's why India took an alternative step to maintain the regional stability, peace and prosperity by forming the BIMSTEC. So your task is to give me the answer, what is the full form of the BIMSTEC. Right? Coming to the next question. The United Nations was formed in the year, the obvious answer is in 1945. So the United Nations was formed to maintain international peace, prosperity, maintain human rights, maintain special development status, maintain and to respect the international laws. Again, I am repeating, the United Nations was formed in the year 1945 to maintain regional peace and prosperity, to maintain the human rights, to maintain the special development agendas, and to respect the international laws that is binding upon all the signed countries. Now, till today, we have 193 numbers of nations under the United Nations framework. As you know, in the year when there is ongoing of the World War I, right? At that time, we have a League of Nations.
a group of nations, league of nations. These nations, they came together by a treaty, by an agreement that is known as Treaty of Versailles. That treaty is known as Treaty of Versailles, right? So it was formed in the year 19 during the era of World War. So when the League of Nations is converted in the year 1945 into United Nations, right? So under the United Nations, we have 6 different or 6 major divisions. This 6 major division is the United Nations General Assembly, United Nations Security Councils, United Nations Secretariat, United Nations Court of Justice, and UN Trusteeship Council. Another is the UNESCO. So these 6 important organs are very much important, right? Out of all these things, you have to remember the functions or the importance of the United Nations Security Councils. Under the United Nations Security Councils, we have 15 member. It is a body. Out of 15 member, 5 member are permanent and 10 members are non-permanent in nature. So 5 member, those are China, Russia, France, USA, China, Russia, France, USA, another is your I think Australia. Not Australia, it is Japan. Right? All the 5 nations, they are not Japan, it is UK. Sorry, UK. So all these 5 nations have the veto power. Out of the 10 non-permanent nature, each nation is elected or selected to the non-permanent status for a year of 2 years. India is now continuously wanting to bring a reform in the existing UNSC structure. So UNSC re gote reform structure aniba, so we have to convince all the member. It is 5 जन जो परमानेंट मेंबर अच्छे समस्ते yes 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 कहले जाइकि सेटा रिफॉर्म हो पार जब सिंगल मेंबर जो नो कहला नो देन that can't be applied. So this is ए प्रकार फेनोमेनन को आमे veto power कहंती, right? So you have to remember the structure, the functions of the United Nations Security Councils. Coming to the next questions, the Constitution Amendment relating to the declaration of the emergency 1978, very important, required the President of the India to act in accordance with, right? Very much important. When there is a declaration of the emergency, we have 3 types of emergency. First you have to remember, right? The first type of emergency that has been given under Article 352, which is due to the any armed rebellion, external war, aggressions, all these things. जदि आम देश को बाहर किसी आमको अटैक ला किसी any threat आसेला, at that time the president can impose or invoke the Article 352. Another article is the 356. It is also known as President's Rule. When any state legislature or any state machinery is not acting or is not running in the very spirit or in the line of the spirit of the constitution, at that time the governor can recommend or can report to the president, Mr. President, my state is not running in accordance with the constitution. At that time the president can impose the president's rule there. It is the Article 356. Another article is the 360, where when there is threat to the credit balance of the nation, or better to say financial system को हम देशर किसी danger आसे, जे हम देशर किसी type of किसी problem आसे credit balance को, से at that time हमें financial emergency कहती, which is present in Article 360. So here important ला एथरे हमर president सेटा declare करबे.
राइट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे से मन को मन डिक्लेयर करें राइट सो से टाइम अप टू 1978 पूर्वर थिला प्रेसिडेंट कहार परामर्श ने कहार एडवाइस करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बट आफ्टर 1978 जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करागला बाय द जनता दल गवर्नमेंट सेटा चेंज करिकना से कहले नो 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 नॉट द यूनियन होल यूनियन काउंसिल मिनिस्टर रादर द कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स so the correct answer is the advice of the not entire council minister, it is advice of the cabinet. Correct answer will be 2, right? Another important thing here I want to share, so during emergency all the fundamental rights are suspended except article 20 and 21. Please students do it, remember. So article 20 or 21 केबे इमरजेंसी टाइम रे आपनकर केही आपन छडे कि नै परिबे एटा कोथ लेखा जे आर्टिकल 359 says no one can snatch your article 20 and 21 during imposition of any sorts of emergency in our country, right? So except 20 and 21 all the fundamental rights are under suspensions. So ei provisions टा आमे कोड बर करछन ना जर्मनी रु बर करछन all fundamental rights except article 20 and 21 are under suspensions except article 20 and 21 which we borrow from the constitution of the Germany. Please students do remember. Third question, the next question is the disqualification on ground of defections from a member of parliament will not apply. Very important, what actually defection is? Defections means suppose मो ना x मुदर पार्टी ए रु बिलोंग करुची राइट मुदर मत पार्टी ए टिकेट देला कहला डियर एक्स तमे मो पार्टी टिकेट नहीं तब लड़ सपोज इवेंचुअली आई ऑन द इलेक्शन दैट मु गली आइदर एमपी ही किना गली किंबा एमएलए ही गली आफ्टर एंटरिंग टू द विधानसभा और योर पार्लियामेंट मु कोन गली इमीडिएटली से पार्टी को चेंज कर देली सपोज एट द विधानसभा और एट द पार्लियामेंट सपोज पार्टी बी पावर रे अछि पार्टी बी गला नो नो मिस्टर एक्स तुम संगे सी पार्टी रो जो पार्टी तुम जित्ती के आछो सी पार्टी को तुम छाड़ी दियो देन प्लीज कम टू माय पार्टी इफ आई एम स्विचिंग माय पार्टी फ्रॉम एक्जिस्टिंग पार्टी फ्रॉम व्हिच आई गॉट द इलेक्शंस और आई गॉट द टिकट टू एंड इलेक्टेड एंड ऑन दैट इलेक्शंस मु सेही टाइम रे सी पार्टी को छाड़ी दिली एट दैट टाइम द I am under the defections law so that I can't do it, right? This particular phenomenon is known as defections. So किए मते सर्टिफाई करिवो किए मते डिफेक्शंस रे बाहर करि परिवो मोर मेंबरशिप्स काटि दे परिवो ओनली द स्पीकर of the house, right? So for a member the first option is the in case of a split of any original political party in which he is elected, no it is not applicable, right? Second, if he has voluntarily given up his memberships of a political party, yes से will not apply को केस रे हम अप्लाई करि परिबा नाही जदी सपोज पार्टी ए अछि पार्टी ए रे सपोज 30 जन मेंबर अछंती पर 30 जन मेंबर कहले 30 जन जदी प्रीवियसली अप टू 1991 जाए कौन थिला जदी 1/3 माने 10 जन मेंबर कहबे कि ना 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 आमे पार्टी छाड़ी दबा एंड आमे गोटे न्यू पार्टी जॉइन करिया देन अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस all the 10 members are under the defection. जेता 1991 परे जेता हमर फेमस कियोटो होलन केस असला सेते बेला हमर द सुप्रीम कोर्ट कहले ना ना इट नॉट 1/3 to the 2/3 member of that political party they agreed upon and they want to make a new political party by disintegrating themselves from the original party to form a new party. At that time the defection is not applicable to that members. जदि 2/3 मेंबर माने आप 20 जन मेंबर जति से आग्री अपन हेले से पॉलिटिकल पार्टी को छाड़ दिला और नुआ पार्टी जॉइन कर दे से 20 जन मेंबर को नारे कौन से डिफेक्शंस लागि परियो नाही, राइट? सो दिस इज द फेमस so this has been provided in the anti defection law amendment act in the year 1991. so ei jagare
जदि गोटे लोक एक्स जब पॉलिटिकल पार्टी छाड़ी दूसरी निज हिसाब से कौन पॉलिटिकल पार्टी जॉइन भी करूनी से टाइम रे आमर ये डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो पारे इन केस जब नुआ पार्टी जॉइन करें देन डिफेक्शन विल बी अप्लाई इफ ही abstains from the voting in the house contrary to the defection of the political party माने है सपोज मो पार्टी एक्स मो पार्टी ए मु एक्स सपोज आम बर्तमान गोटे हाउस रे भोटिंग है मो पार्टी जी मुख्य सचेतक ये हुईप चीफ हुईप मत कहले डियर मिस्टर एक्स आम पार्टी तुमको आदेश दूसरी आम तुमको रिक्वेस्ट करी तुम आम फेवर भोट दब सपोज मु विधानसभा को पहले कि एमपी पार्लियामेंट को पहले मु पार्टी एगेन्स्ट रे भोट देदेली पार्टी मैंडेट एगेन्स्ट रे भोट देदेली देन एट दैट टाइम दी party can move a defections letter to the speaker to kick me out from the party so सेही टाइम रे भी हमर करि परिबे सेटा किंतु एबे गोटे सेतरे बहुत सारा चेंजेस होना जी 35 डेज रो टाइम दिया जाए सेटा सेटा चैनल मेंबर से आउट रो करिपर सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट concept so another thing is that if he nominated member of a house joins a political party after जदि से प्रेसिडेंट किंबा ताको गवर्नर कदार से नॉमिनेशन सही तो जब आफ्टर 6 मंथ्स से को पॉलिटिकल पार्टी से जॉइन कर देला देन हिज नॉमिनेशन और हिज नॉमिनेशन विल बी कैंसल बाय यूटिलाइजिंग द रेटिफिकेशंस लॉ सो को जगह अप्लाई हो पारिबन जदि से वॉलंटरीली आपनकर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 2 इज करेक्ट आंसर जदि वॉलंटरीली छाड़ दोजी एंड ही इज नॉट जॉइनिंग इन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर गेटिंग विन सो सेही टाइम रे आपनकर डिफेक्शंस लॉ हिसाब से अप्लाई हो पारिबन नाही Coming to the next question, which one of the following shall not be considered inadequate ground for the issue of a proclamation of the national emergency? Right? I mean, which one of the following shall not very word important word not be considered an adequate ground for the issue of proclamation of the national. आम को केस रे national emergency को माने आम तो proclaim करि परिबा नै up to मन रखि दे 1978 जाए गोटे आर्टिकल 352 यूज करिकना आमे क्षेत्र किसी प्रोविजन्स थिला लाइक योर वार एक्सटर्नल एग्रेशंस आर्म रेबेलियन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस सॉरी आर्म रेबेलियन नथिला वार एक्सटर्नल एग्रेशंस और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को यूटिलाइज करिकि आमे देश रे इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी लगे पारिबा एटा किए करथले जता 1975 प्रिसाइजली 25th जून ऑफ 1975 रे जो मैडम इंदिरा गांधी तो इलेक्शन सारी जाते से टाइम रे से राग रखिकिना से गोटे आम देश इंटरनल इमरजेंसी लगे बाय यूटिलाइजिंग ए वेरी फेमस वर्ड मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से टाइम रे इलेक्शन सारी गले बहुत सारा ऑफर होता है जमी जयप्रकाश नारायण आपणकर अटल बिहारी वाजपेयी राइट एम सब लीडर्स माने मुरली मनोहर जोशी एम से टाइम रे कांग्रेस लीडर एगेन्स्ट सब रिवोल्ट करते से रिवोल्ट जो करते से रिवोल्ट को से मैडम गांधी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस देखिना से देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते राइट से इंटरनल इमरजेंसी रहा आपंकर अप टू 21st मार्च ऑफ 1977 राइट तापर जो आमर सी 42nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आनी 1977 पर जो फ्रेश इलेक्शन है मैडम इंदिरा गांधी हारी जाते से 1977 रे सॉरी 78 रे जनता दल सॉरी 77 आई थिंक 77 रे जनता दल गवर्नमेंट आसला पावर को से 44th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आनी जो थे कि बहुत सारा चेंजेस जोड़ा करते 42nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताको चेंजेस कर देते से जो वार्ड था आर्म्ड रेबेलियन से आर्म्ड रेबेलियन को उठे देते नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस से उठे देते से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को उठे देकिना से इनसर्ट कले आर्म रेबेलियन वर्डटा यूज करदे राइट सो दिस इज द स्टोरी सो द करेक्ट आंसर इज द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कोडा को बर्तमान आम यूटिलाइज कर परिबा नाही इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इज नो मोर इन फोर्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ is different from its counterpart in the USA very important को जगह आम यूएसए ठर डिफरेंट हम सेकेंड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर इन इट्स एडवाइजरी रोल as you know the Supreme Court has different functions one of the most important function is the advisory functions by utilizing the advisory role of the USA or of the Supreme Court the president utilizing the article 143
he can seek any advice from the Supreme Court. But in case of USA, this the President of the India is not entitled to seek advice from the Supreme Court. It's Supreme Court. So this is the distinguishing feature that is different from USA, right? Coming to the next question, which of the following items comes under the concurrent list of the Indian constitutions? As you know, under the Indian constitutions, we have three different lists. One is union list, another is a state list, another is a concurrent list. By utilizing the law that or the subjects that are present under the union list, by utilizing this list, the Union Parliament or the Parliament can legislate law. The items those are present under the state list, utilizing these subjects, the state legislative assembly can make law. And concurrent list, upon which both the union list and parliament and the state list, but by utilizing the concurrent list, both the parliament and the state Vidhan Sabha, they can make law. So we have the interstate rivers. Interstate river is present in the union list in the entry number 24. Trade union is a union list, right? Union list. Not is a trade union. I think it is a concurrent list. Sorry, it is a concurrent list. Citizenship is a union list that is present in the entry number 17. Local government is present in the state list that is present in the entry number 5. So the correct answer is the trade union. Trade union is the concurrent list. Coming to the next question, the directive principles of the state policy included in the constitutions of India have been inspired by the constitution of. The correct answer is the Ireland. Ireland pakuru आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करथिले. ए आयरलैंड काठू कॉपी करथिला ना काडो इन्फ्लुएंस हितला स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशंस, स्पेन रो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करथिले. बट द क्वेश्चन इज द आमे काडो अडॉप्ट करथिले. द करेक्ट आंसर इज द आयरलैंड. केते इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबे एतरे आई वांट टू गिव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जोतरे किछि सर्टेन रूल्स किछि सर्टेन विजन्स दिया आइछि जोडा को बेस करिकना जोड़ा बेस कर स्टेट लॉ तैयारी करिवो. सो द डीपीएसपी इज द कॉर्नरस्टोन और द बेडरॉक ऑफ फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ लॉ, राइट? ए डीपीएसपी मन रखिबे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस रे रहिछि फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेट. इट इज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर इंस्ट्रक्शंस जोड़ा कि क्या को इंस्ट्रक्शन दब बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स को से दब. मन रखते डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर. जदि कौन स्टेट डीपीएसपी को नहीं लॉ तैयारी कोनी वी कैन नॉट मूव टू द एनी कोर्ट, राइट? सो इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर, राइट? So coming to the some other aspects, आम यूएसए रु कौन अडॉप्ट करथिले वेरी इंपोर्टेंट मु बहुत कर देबी कभी पावर सेपरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, राइट? इम्पीचमेंट आम प्रेसिडेंट को केमी बाहर कर पारिबा, राइट? ए सब जिंस आम यूएसए ठार अडॉप्ट करथिले. अगेन आई एम रिपीटिंग पावर सेपरेशंस माने आमर तीनटा ऑर्गन अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे. गोटे हला आपनकर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव रो काम हला टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव रो काम हला टू इंप्लीमेंट लॉ, जुडिशियरी रो काम हला टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द लॉ. सब समस्त परस्पर फंक्शंस करबे. लेजिस्लेटिव काम जुडिशियरी करि पर जुडिशियरी काम एग्जीक्यूटिव करि परिबो नै, राइट? सो दिस इज द स्ट्रिक्ट सेपरेशंस ऑफ द So this is the separation of the power. Federal structure, we know fundamental right, the judicial review, the impeachment. Ireland ro ame anithile, right? You have to remember the DPSP, right? Nomination process to Rajya Sabha, au method of elections of president, right? Again I am repeating, Ireland ro ame anithile DPSP,
right? The process of nomination to the Rajya Sabha and the method of president elections. आम कर्नाटक आनी क्वासी फेडरालिज्म स्ट्रक्चर मुझे डिटेल एटा कहूनी व्हाट इज क्वासी फेडरालिज्म एंड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन of the Supreme Court and appointment of the governor by the center. এই তিনটা স্ট্রাকচার আমি কানাডা কনস্টিটিউশন আনতেলি এগেন আই রিপিটিং क्वासी फेडरालिज्म advisory role of the Supreme Court and the appointment of the governor by the center, right? Australia रो आम आनी concurrent list structure, joint sitting when there is a dialogue between two houses, that is present in the article 108. Another is the freedom of trade and commerce. এই চারটা স্ট্রাকচার আমি অস্ট্রেলিয়ান কনস্টিটিউশন बोरो करी. Coming to the next question, the power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under. We have आम जानते सुप्रीम कोर्ट रो बहुत सारा पावर थाए, जुरिस्डिक्शंस थाए. गोटे जुरिस्डिक्शंस है दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस है जितना गोटे सेंटर आउ स्टेट भितर किसी डिस्प्यूट्स लगी रही थो किंबा सेंटर गोटे स्टेट पाखे आउ एनादर स्टेट आ गोटे पाखे थी किंबा बहुत सारा स्टेट्स पाखे सेंटर गोटे पटे थी किंबा किंबा स्टेट्स भितर जदि किसी डिस्प्यूट लगी यही चार्टा कंडीशंस जति आम किसी अरेंज कला से टाइम आम सुप्रीम कोर्ट तार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस यूज करके एडजुडिकेट कर सॉर्ट आउट कर प्रॉब्लम को, राइट? सो इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू इट, रिमेंबर. Coming to the next question, the Cuban Missile Crisis and the building of the Berlin Wall. मन रखिथे आमर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है और जो बर्लिन वॉल तैयारी कला पोस्ट सो ड्यूरिंग द कोल्ड वार. सो कोल्ड वार कॉन्सेप्ट कौन मु इन शॉर्ट कहबी जो आमर गोटे पावर ब्लॉक डिवाइड होता गोटे गोटे यूएसएसआर थिला आ गोटे यूएसए थिला से भितर किए रिच किए ये रही टाइम भितर गोटे इंटरनाली से गोटे सब सपोर्ट गैदर करते कंट्री मानकर. that types of war is known as cold war. से टाइम रे मु नॉट गोइंग इन डिटेल. सो से गोटे बर्लिन वॉल आ गोटे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता, राइट? सो यू प्लीज डू रिमेंबर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's political party system has been considered as empty bottle by the Bryce? Bryce is a political philosopher. It is a very tricky question. Most of the students may not be able to appear this question. So the correct answer is USA. Bryce is a political philosopher. से कहले USA रे दुईटा पार्टी सुले रोल करे. They have not multi-party systems. One is your Republican Party, another is your Democratic Party. राइट? सी कहते दुईटा पार्टी से भोटिंग करती कि इलेक्शंस मैनिफेस्टोस दिखते से टाइम रे आप देयर इज नो एनी डिफरेंस इन द एजुकेशन ऑफ देयर पॉलिसी और फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी. बोथ आर मेकिंग द सेम पॉलिसी. से कहते ये एक्चुअली टू एम्प्टी बोटल से हम बाय द ब्रश. सो द करेक्ट आंसर इज द यूएसए. द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द USA is the John Biden, right? से जी की 46th president of the USA, जी की Democratic Party से member थे, right? Coming to the next question, the concept of separation of power was given. जो कोई थे separation of power very previous slide कोई थे, it was given by the Montesquieu, right? So very important. Next, coming to the question, the unlawful detention of a person is questioned by the writ of, suppose गोटे person X ताकू certain, suppose गोटे लोक any person Y किंबा any police किंबा any government authority or public servant Z any नहीं पारे, either it is private member or it is a government servant or public servant जब ताकू unlawful जब ताकू टेकिन हला कि ताकू जब किसी unlawful तो detention कला ताकू रखी पकला कोड़ी, राइट? सही टाइम रे सेटा सी पर्सन रो एक्स रो फंडामेंटल राइट्स रो वायोलेशंस हुए. जेतरा फंडामेंटल राइट्स रो वायोलेशंस हुए आम से आर्टिकल 32 को यूज करती जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहती, जोटा कि भेरी हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कहती.
सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट से फंडामेंटल राइट वायोलेट है तो आर्टिकल 32 आम यूज करवा आर्टिकल 32 किए आर्टिकल 30 को यूज करके आम डायरेक्ट आइदर हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करवा कि डियर ऑनरेबल कोर्ट प्लीज गिव मी जस्टिस माय फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटेड बाय आइदर पर्सन एक्स और जेड से टाइम आइदर हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट सी रेट इश्यू कर रेट इश्यू कहीं कहीं व्हेन देयर इज एन वायोलेशन when there is a violations of the fundamental right against any citizens of the India right so rate इतना issue करेंगे कि हाई कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट so जितना हाई कोर्ट रेट इश्यू करेंगे यूजिंग इट्स पावर आर्टिकल 226 आउ सुप्रीम कोर्ट द इश्यू करेंगे आर्टिकल 32 राइट क्या को इश्यू करेंगे ना जी आइदर एनी प्राइवेट मेंबर किंबा एनी स्टेट राइट से इश्यू करेंगे सो से इश्यूटा कहुए से जो रेट इश्यू करेंगे वन ऑफ दैट इश्यू इज नॉट ए हबिस हबिस कर्पस माने सपोज गोटे मु पर्सन एस को अरेस्ट कली अरेस्ट कले मुझे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट इंटिमेट करी कि मुझे ग्राउंड से अरेस्ट करुँच फर्स्ट सेकेंड मुझे 24 आवर्स रु मैक्सिमम टाइम मुझे आपको रखिपारे आपंकर कस्टडी राइट विदिन 24 आवर मु आपको नियरेस्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे मुझे आगे हाजिर करी से सर्टेन एक्सप्रेशन अच्छी धर मुझे शनिवार दिन सपोज शुक्रवार दिन अरेस्ट कली धर शनिवार दिन कि रविवार दिन सपोज कि गवर्नमेंट हॉलिडे रही जाए एक्सेप्शन से टाइम को एक्सक्लूड कराए आउ सपोज मोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट धर 100 किलोमीटर दूर रोचे से जर्नी टाइम को एक्सक्लूडेड कराए 24 आवर्स मोर ओवर मु 24 आवर्स भितर मोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मुझे जदि न करुच्ची देन the Supreme Court or High Court can issue a writ of habeas corpus against me. एबे रिसेंटली लिखा था जम्मू एंड काश्मीर रे देखिए बहुत सारा नंबर्स ऑफ केसेस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस रिगार्डिंग द habeas corpus अनलॉफुल डिटेंशन आपको रखा जिवो राइट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस राइट टू एजुकेशन हैज बीन प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर वेरी इंपोर्टेंट एजुकेशन जो राइट बड़े फंडामेंटल राइट्स जोटा अच्छी ताकू हमर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे रखा जाइतिला राइट सो आम जानते फंडामेंटल राइट इज प्रेजेंट इन दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस राइट ये फंडामेंटल राइट से 16 to 14 इयर्स एज ग्रुप रो सब पिला को सब ऑल चिल्ड्रंस विल गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशंस और कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशंस राइट से गोटे आडिशनल इनफॉरमेशन दूसरी जो आम एजुकेशनटा को आम गोटे कंपल्सरी कले गोटे एक्ट कले गोटे फंडामेंटल राइट्स रखिले से एजुकेशनटा आगुरी आम डीपीएसपी रे थिला राइट मु इन डिटेल जाऊनी आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जोटा कि डील करथिला एजुकेशन को लेकिन ये डीपीएसपी रो फिलोसफी को आम यूज करिकिना ताको आम लॉ तैयारी कले से लॉ को आम इनकॉर्पोरेट कले आर्टिकल 21A by making 86th Constitutional Amendment Act of 2002. So ये जो राइट टू एजुकेशन जो विजन जो फास्ट ड्राफ्टिंग करते the students please remember a person is there that is Ramamurthy committee जी ड्राफ्ट करते ये रिपोर्ट इन द ईयर 1990 राइट जिते बड़े गोटे केस आसला उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स अगेन आई रिपीट उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस अदर्स से टाइम सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क डिसीजन देले कहले एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट राइट ये फंडामेंटल राइट को फिलोसफी रू आसूची राइट टू लाइफ जोटा आर्टिकल 21 से डिराइव करुच्ची राइट से तापस मजुमदार कमिटी राइट इन द ईयर 1999 सी कौन कले 21A आर्टिकल इनसर्ट करते राइट आमर से आर्टिकल एक्ट होगला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से गोटे बिल दरकार पड़ा कौन तो इन डिटेल रही राइट टू एजुकेशन बिल आम करते 2008 रे आ से बिल को मतलब बोथ हाउस रे पास करते दैट इज नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीए एक्ट ऑफ 2009
but the actual amendment was done by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. ଯଦି ଆର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତ ଆମର 81st Constitutional Amendment Act ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏ 81st Constitutional Amendment Act ରେ ଆମେ 16(4)B ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। 16(4)B ଟା जोटा कि हम रिजर्वेशंस रोची इन दी जॉब माने जो मैंने ऑलरेडी इन जॉब अच्छे से मैंने हायर प्रमोशंस हेबे, से हायर प्रमोशंस रे किछि नो आपनकर से भी रिजर्वेशंस रहिबो, एनी अमाउंट रिजर्वेशंस रहिबो। किंतु गोटे जॉब रे एंट्री करिया कोले मन रखिदे रिजर्वेशंस 50% रु अधिक रहि जाई परिबो नाही, किंतु एक्जिस्टिंग जॉब स्ट्रक्चर इट मे गो अप टू मे गो बियॉन्ड 50%। जोटा 81st Constitutional Amendment Act रे हमर कुआइतले, राइट। 73rd Constitutional Amendment Act इज रिलेटेड टू द पंचायत राज, जो थे कि आमे 3 टायर गवर्नमेंट सेक्टर को आमे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देइथिले। नेक्स्ट कम टू दी 91st Constitutional Amendment Act 2003 रे पास कराइतला, राइट। एथि से कहूँ जो आमर गोटे यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो स्ट्रेंथ टा आमर 15% ऑफ द टोटल हाउस रहिबो। सपोज गोटे हाउस रो स्ट्रेंथ थला 100 से 15 जन आपनकर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिबे। तो एटा एग्जांपल देली आपन 15% रे से सीलिंग रहबा दरकार, राइट। मु आपन जेटा कहितली आ गोटे एनदर 91st Constitutional Amendment Act रे 1/3 मेंबर चाहे रिजाइन करिया पे सेतला सेमने रिजाइन करले ताको डिफेक्शंस लागुतला, किंतु सेटा चेंज होला 2/3 को चेंज होला। 2/3 मेंबर दे रिजाइन करछन और सेमाने से पार्टी को स्प्लिट करके नुवा पार्टी फॉर्मेशंस करते सेई टाइम रे कोनसी मेंबर पे अगेंस्ट डिफेक्शंस लागि परिबो नाही, राइट। एनदर इंपोर्टेंट केस 91st Constitutional पर 1992 रे गोटे फेमस कीहोटो हलन केस आसिला। से कीहोटो हलन केस रे से कहले सपोज द ओनली द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जे किला प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जे कि स्पीकर जे कि सर्टिफाई करिवे कि जे गोटे जे कि डिस्क्वालिफिकेशंस करिवे मेंबर को, तांकर डिस्क्वालिफिकेशन जो करिवे सेही ऊपर नो वन कैन चैलेंज। एटा सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट रे आपनटा चैलेंज करि परिबे नाही। बट इन द फेमस कीहोटो हलन जजमेंट कहले किंतु दी वे को वे रे करूछंती से वे डाकू मध्ये आमे जुडिशियल रिव्यू रे आनी परिबा, से डाकू सुप्रीम कोर्ट किबा हाई कोर्ट आमे चैलेंज करिबा से वे डाकू, किंतु कोन पई करले कोन नाही सेटा को आमे चैलेंज करि परिबा नाही। द स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी, बट द वे ही इज exercising these defections it can be questionable under the court of law. So this is the famous Kyoto Hall case in the year 1992. So all the questions asked in the year 2016 we have discussed. So hope you have understood and enjoyed this lecture. So in the next class we will discuss the questions asked in the 2017 preliminary paper, right? So if you are new to this lecture channel, then please subscribe this channel and press the bell icon and make it share among your friends. So until the next video, stay safe, stay indoor, have a good day. Thank you. God bless.